हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर आज न्यू वीडियो लेके आया हूं। बट उसके पहले आप लोगों से कुछ बातें मैं करना चाहता हूं। बहुत दिनों से आप लोग वीडियो देख रहे हो, बट यस कि आप लोगों का मैं चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, बट मैं फील करता हूं कि आप लोग मेरे क्लास में बैठे हुए हो और मैं अपने स्टूडेंट को जो बोलता हूं, जैसे गाइड करता हूं, वही मैं आपको करने वाला हूं, अगर वो आप लेना चाहते हो तो। सी, द फर्स्ट थिंग इज, हमें लाइफ में अकाउंटेबल होना चाहिए। किसी के पास, किसी के साथ हमें अकाउंटेबल रहना चाहिए। नाउ हो सकता है आपके साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो रहा हो, बट कमेंट में ये कांटेक्ट हो सकता है। किस तरह से पढ़ना होगा, मैं आपको एक ट्रिक्स बोल रहा हूं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इतने सालों से 22 से 24 साल तक यही होता आया है और आई एम गोइंग टू गिव यू दोस डिटेल्स। आप लोग मुझे हर दिन ये थोड़ा सा काम करके आपको मुझे भेजना पड़ेगा। वो क्या है? हर दिन बायोलॉजी में 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस। टोटल कितना हो गया? 45 क्वेश्चंस। आप हर दिन ये जो क्वेश्चंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये करके आप मुझे कमेंट में भेजो, सर दिस इज डन। मैंने यहां पे फिजिक्स में इतना क्वेश्चन किया, बायोलॉजी में इतना क्वेश्चन किया और केमिस्ट्री में इतना क्वेश्चन किया। अगर आप केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। लाइक फिजिक्स में आपने 10 किया, बायोलॉजी में 25 किया और केमिस्ट्री में आपने कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाए। हो सकता है। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ और आप मेरे पास अकाउंटेबल रहो। एवरी अदर डे, हर दिन आप मुझे कमेंट करो ये इंफॉर्मेशन देखकर। बिलीव यू मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू जस्ट लाइक माई ओन स्टूडेंट्स जो हमारे क्लासरूम में आते हैं, ये पावर बैच में है। उनको जिस तरह से हेल्प किया जा रहा है, मैं उस तरह से ही आपको हेल्प करूंगा। आई एम गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप ये काम कर सकते हो, छोटे से काम अगर आप कर सकते हो, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज टू इंप्रूव इट, इंक्रीज द नंबर बाय 5%। हर दिन आपको 5% करके ये क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका फाइट आपके खुद से है, किसी दूसरे से नहीं है। यू कैन ओनली बीट योरसेल्फ ओनली। और ऐसे हर दिन अगर आप खुद को बीट करते करते जाओगे तो एक दिन वो टारगेट अचीव करोगे जो मेरे टॉप कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, और वो है बायोलॉजी में 200 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 100 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चंस। ये दिन भी आपके पास आने वाला है, पर एक दिन में नहीं आएगा। आस्ते आस्ते अगर जो मैं आपको बोल रहा हूं इस तरह से आप 25, 10, 10 करके क्वेश्चंस करोगे, 25 इन बायोलॉजी, फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस आप करके मेरे पास भेजोगे एंड यू आर कमेंटिंग मी, देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू। वादा रहा कि मैं आपको हेल्प करूंगा उस तरह से जिस तरह से वो टॉप स्टूडेंट्स जो आज ऑल ओवर इंडिया के बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट कॉलेज में गए हैं। दिस इज द ट्रिक आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। फाइन, सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर दिस। नेक्स्ट वीडियो से मैं इस वीडियो के बाद से मैं आपका ये कमेंट आपसे मैं मांग रहा हूं। ये कमेंट आप करोगे, व्हाट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू, ये आप जस्ट वेट एंड वॉच। yes my dear students, today I'm going to start with a video on Phycomycetes under kingdom fungi. So what is the topic? The topic is about Phycomycetes. So it's the first class under kingdom fungi. So first class is, we know that kingdom fungi, there are 4 classes. Under these 4 classes, the first one is Phycomycetes. The second one is what? Ascomycetes. And third one is Basidiomycetes. And the fourth one is Deuteromycetes. Now the first one is Phycomycetes. आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। What is the meaning of the term phycology? Phycology मतलब study of algae is called phycology. Study of algae is called phycology. ये हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, बिकॉज algae हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर
दैट इज प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे. सो फाइकोमाइसीटीज, माइसीटीज मतलब इट हैज कम फ्रॉम माइसिलियम, माइसिलियम मतलब फंगी. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? एल्गल फंगी. यस, वी कैन ऑल्सो कॉल द फाइकोमाइसीटीज एज एल्गल फंगी. So what is the common name? The common name is algal fungi. So this is algal fungi. So let me give you some basic idea. इसका morphology of mycelium किस तरह का है? Mycelium का morphology कैसा है? How the mycelium looks like? Remember in the very first video introduction I've talked about अगर बहुत सारे nucleus हैं without any cell wall in between, बीच में कोई cell wall नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा असेप्टेट. असेप्टेट, कोई सेप्टा नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है. किससे बना होता है सेल वॉल? व्हाट इज द कंपोजिशन दैट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? काइटिन. सो काइटिन नहीं है यहां पे, काइटिनस सेल वॉल नहीं है. असेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, असेप्टेट एंड सिनोसाइटिक. सो दिस इज द टाइप ऑफ माइसिलियम दैट दे हैव गॉट. फाइकोमाइसीटीज में ये माइसिलियम दे हैव गॉट. नाउ ये माइसिलियम हुआ, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट. किस तरह से रहते हैं ये? ऑब्लिगेट पैरासाइट है. कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट. कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑब्लिगेट मतलब क्या है. दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ये आप लोग जानते हो ऑब्लिगेट पैरासाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑब्लिगेट? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. सो नॉर्मली दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड दे आर very you know what, they are not primitive, they are not advanced, they are primitive type of fungus. They are primitive type of fungus. Fine, they are not advanced fungus, they are primitive type of fungus. Now ये normally ये जो फाइकोमाइसीटीज है, ये फाइकोमाइसीटीज तो पैरासाइट है एंड बेसिकली इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल जाने के पहले let us talk about their way of reproduction. Their way of reproduction. When we talk about reproduction, we know कि ये तीन तरह के reproduction दिखाते हैं. One is vegetative, one is vegetative, the second one is asexual mode, and the third one is sexual mode. Fine. So asexual mode normally हम जानते हैं कि ये sporangiosperms, जियोस्पोर्स माध्यम से वो asexual reproduction दिखाते हैं. And what are sporangiosperms? We're going to talk about that. In the earlier video, I've talked about that sporangiosperms, ये sporangiosperms normally sporangium में रहते हैं and they can be endogenous. They can be endogenous मतलब अंदर रह सकते हैं, और some of them can be what? Exogenous. Some of them can be exogenous, बाहर रह सकते हैं. They can be exogenous. So let me show you this particular figure about some of the examples. Okay, पहले थोड़ा example देख लेते हैं. इसका example क्या होगा? The example can be, the first one is albugo. ये आपके बुक में है, albugo candida. Albugo candida. What it makes is, it makes white rust disease, yeah, white spot disease of the family Cruciferae. Mainly mustard में white spot disease of mustard में ये दिखाते हैं. I'm going to show you the particular diagram of it, a particular figure of it, so that आपके मन में ये बैठ जाए. How it looks like. White spot disease of Cruciferae. This is the figure. White spot disease of Cruciferae. यहां पे देखो, ये white spot दिख रहा है आपको. This is white spot in the leaves of Cruciferae. ये लीफ है, लीफ के ये this is what, you know, this is petiole, और ये लीफ में there are some white spots. ये सब fungal infection हो गया है. This is done by albugo candida. Fine. Next,
Example, next example is about saprolegnia. ये क्या बनाता है? It creates salmon disease of fish. Salmon disease of fish. And how they look like? The salmon disease of fish look like this. Yes, ये जो fish है, this is the fish, you can see the fish, and this is the fungus, that is saprolegnia. ये देखो यहां पे गिल के पास, this is the disease caused by it. This is called saprolegnia. Fine. This is a disease caused in the fish. And then the next example of Phycomycetes is Phytophthora infestans. Phytophthora infestans is very, very important, star mark on it. This creates lead blight of potato. Fine. Lead blight of potato, very, very important. It is called as, it has caused Ireland famine. Fine. देखने में कैसा है? Lead blight of potato. This is the potato leaf, and see the lead blight of potato is this. देखो लीफ में ये किस तरह से इसका जो टेक्सचर है, लैमिना has been changed. See, this portion is infected, and this is lead blight of potato. See, लीफ में यहाँ पे these are the infections in the potato leaf, lead blight of potato. Okay, now the next example. After this, the next example is very common. हमें ब्रेड में मोल्ड मिलता है, दिस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड. ब्रेड में फंगस दिखता है, and normally it happens in this particular time which is rainy season. और इस rainy season में मॉइस्चर ज्यादा रहता है एटमॉस्फेयर पे, and ब्रेड बनता है किससे? शुगर से बनता है. So when the air, it already contains what? The spores of the fungus. और वो स्पोर जब वो केक में बैठते हैं, ब्रेड में बैठते हैं, फ्रॉम दैट ब्रेड दे टेक अप दैट शुगर, और वहां पे वो क्या करते हैं? सबस्ट्रेटम से, हॉस्टोरिया से वो बैठते हैं, एंड दे स्टार्ट टेकिंग द न्यूट्रिशन, एंड अल्टीमेटली दे ग्रो, एंड उसका स्पोर गिरते हैं, एंड दे लुक लाइक ब्लैक कलर्ड. सो दे आर कॉल्ड black mold, or they are also called as black mold. Example is rhizopus. And there's an example called mucor. Yes, let us see some of the figure. Yes, this is another example. I will tell you about that, but before that, Phycomycetes के बारे में आपको जब बात किया जा रहा था, that means we have to also give you this information. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा दिखा देते हैं. This is nothing but this has made what? White ear disease of bajra. ये क्या बनाया है? White ear disease of bajra. See, ये देखो बाजरा के यहां पे देखो, this is infected. So what this causes? This is caused by sclerospora, graminicola. It causes white ear disease in bajra. Fine. Sclerospora graminicola. So these are the different types of examples of Phycomycetes. What is again very important? Let me show you the figure of sinusitic hyphae. वो देखने में कैसा है? देखो ये है
दिस इज द फिगर विच वी कॉल इट एज सी, ये फ्रूटिंग बॉडी है कॉल्ड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम एंड स्पोरेंजियम, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या रहेगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स रहेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स रहेंगे। सो दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। सो स्पोरेंजियोस्पोर्स कहां पे है, अंदर है या बाहर है? अगर अंदर है वी कॉल इट एंडोजिनस, एंडोजिनसली प्रेजेंट, अंदर रहता है। एंड द स्टॉक विच होल्ड्स द स्पोरेंजियोस्पोर और स्पोरेंजियम इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। फोर मतलब क्या है, फोर मींस स्टॉक, द स्टॉक विच होल्ड्स द sporangium is called sporangiosphore, four. And you see, these are the spongiospores, these are haploid spores. So ये haploid spores यहाँ पे गिरेगा, again they are going to grow. और यहाँ पे देखो सिनोसाइटिक, ये न्यूक्लियस है, they are सिनोसाइटिक hyphae, that means they don't have any cell wall in between, they don't have cell wall in between, they are multinucleated conditions, they are multinucleated conditions. और ये नीचे क्या है, this is the haustoria type of structure, rhizoid by which they are going to, इस rhizoid से क्या करेंगे, ये rhizoid से ये जाकर attach होंगे with the substratum, they are going to attach themselves with the substratum, ये rhizoid है। Yes my dear students, this is what is the most important information about Phycomycetes, class Phycomycetes। आपको जो करना है, हर एक पॉइंट लिखो, बुक से थोड़ा फाइकोमाइसिस को देख लो। एंड माइंड यू, व्हेन वी टॉक अबाउट फंगस, हमें याद रखना है कि फंगस कभी कभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं विद सम एल्गी एंड आल्सो, एंड वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट लाइकेंस। एंड लाइकेंस आर द बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस जहां पे होंगे। अगर आप किसी हिल एरिया में जाते हो, वहां पे आपको हो सकता है लाइकेंस मिले, अगर वहां पे कोई सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो या ना हो, वहां पे आपको लाइकेंस मिलेंगे, because lichens are called bioindicator of air pollution. And another most important thing, sometimes this fungi can remain attached with the roots of higher plants in the form of mycorrhiza. और mycorrhiza किस में हेल्प करते हैं? They help in what? They help in absorption of phosphorus. They help in absorption of phosphorus. अगर आप class 12 में हो, if you are a repeater this year, just check it out, page number 158 of new book of class 12, where you have to see the last paragraph of mycorrhiza, last paragraph of microbes in human welfare. वहां पे mycorrhiza के थर्ड लाइन में they help in absorption of phosphorus, they help in absorption of phosphorus, because mycorrhiza, rhiza टर्म कहां से आया, rhizoid से आया, और myco मतलब क्या है, fungus. So fungus they remain attached with a root like structure and they help in increasing the surface area for absorption of water and minerals. At the same time, what they can do is they can help in the absorption of phosphorus, which is most important for a plant to grow. Fine. So याद रहे my dear students, जो इंफॉर्मेशन वीडियो के पहले आपको शेयर किया गया है, be accountable, remain accountable. I can become your mentor. I am inviting you for that. Comment me in the comment section. Whatever number of questions you can solve, write down in the comment and comment me on everyday basis.